Okay. Hello guys. Let's start today's session. And okay. So before starting this session, let me ask you a question. Like, how many of you aware of these SQL queries and all? Anyone knows? Because I need to know कि you people know anything about SQL or not. Otherwise, I will teach you some basics about that, um, which we are going to use. So I just wanted to know if any one of you know anything. Okay, okay, cool. Okay, chalo. Let's study online SQL. Okay, okay. So here there is so many table. Like I want to teach you few of the basics. Like see, okay, let me start from here. Okay, for any table, okay, for any table that we are creating in our database, uh, so each table have some, should must be having some primary key. Primary key is basically a unique key which is specifically uniquely identifies each row. मतलब जो भी हम लोग का टेबल में डेटा स्टोर होगा, ठीक है, सपोज यहाँ पे जॉन का डेटा स्टोर्ड है, राइट. सो जॉन इज अ कॉमन नेम, राइट. सो देयर शुड बी समथिंग कि हम लोग यूनिकली वो जॉन की डेटा को आइडेंटिफाई कर पाए. So which is not common here, which cannot be common in this case is this customer ID, right? Customer ID कभी दो person का same नहीं होगा, right? It will be different only. So that's why if you see customer ID is the unique key here. ये कभी duplicate नहीं होगा, ये कभी कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, राइट. ये हमेशा यूनिक रहेगा, कभी हम लोग इसको डुप्लीकेट कर भी नहीं पाएंगे बिकॉज दिस इज you if you see integer type and it is auto incrementing while we are adding any rows to this. ठीक है. So प्राइमरी की इज ओके. प्राइमरी की का डिफिनेशन क्लियर है. सो प्राइमरी की हम लोग ने जाना कि लाइक प्राइमरी की होता क्या है. सिमिलरली देयर इज द की नेम नोन एज फॉरेन की. फॉरेन की क्या होता है? Foreign key is basically used to relate two tables, like how the two tables are connected, on the basis of what two tables are connected. It is totally depend on foreign key. So foreign key वो एक ऐसा की होता है जो बेसिकली हम लोग का हेल्प करता है कि एक टेबल से दूसरे टेबल किस किस कॉलम से वो लोग कनेक्टेड हैं, किस बेसिस पे वो लोग कनेक्टेड हैं, ये हम लोग का फॉरेन की डिसाइड करता है. इफ यू सी हियर द ऑर्डर एंड द कस्टमर टेबल, सो ये दोनों कस्टमर आईडी से कनेक्टेड है, राइट. एंड कस्टमर आईडी इज द फॉरेन की फॉर दिस ऑर्डर टेबल. ओके. सो इसमें क्या हो रहा है, जो ये कस्टमर आईडी है ये हमें बताता है कि ये बताता है कि कस्टमर आई पर्सन हु हैज कस्टमर आईडी 4 हैज हैज ऑर्डर्ड दिस कीबोर्ड. ओके. सो उसने ये कीबोर्ड ऑर्डर किया है और उस पर्सन का कस्टमर आईडी जो है 4 है. सो दिस इज हाउ. और उसका नाम अगर हम लोग देखें कस्टमर आईडी हम लोग को कहाँ मिलेगा, विच इज ऑब्वियस सी बात है कस्टमर टेबल में. कस्टमर टेबल अगर हम लोग आएंगे देन कस्टमर टेबल में अगर हम लोग आईडी 4 पे क्या है हम लोग का जॉन एंड ही इज फ्रॉम यूके. सो जॉन हु इज फ्रॉम यूके हैज ऑर्डर्ड दिस कीबोर्ड. ओके. सो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ दिस फॉरेन की. ठीक है. फॉरेन की क्या करता है, दो टेबल्स में रिलेशनशिप को बताता है. ठीक है. कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द टू टेबल्स आर कनेक्टेड, ऑन द बेसिस ऑफ विच की द टू टेबल्स आर कनेक्टेड. ठीक है. कभी भी दो टेबल को कनेक्ट करने के लिए एक जो हम लोग का कॉलम है, ये कॉलम जो है उसमें जो एक
कम से कम एक तो कॉमन होना ही चाहिए, लाइक दोनों टेबल में एक कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज दो टेबल में कभी कोई कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा। ओके, क्लियर? सो वी आर सीन फॉरेन की, वी आर सीन दिस व्हाट वी से primary key as well. Okay. Now there is something called composite key, which is no, I'm not going to cover. You will study in your college. ठीक है, जब भी आपका कॉलेज में पढ़ा जाएगा। अभी के लिए फॉरेन की प्राइमरी की इज इम्पोर्टेंट, सो आई एम टेलिंग यू दिस। एंड नाउ ठीक है, अभी देखते हैं कि लेट्स सी डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं इसमें एसक्यूएल में, एसक्यूएल क्वेरीज में कैसे हम लोग डेटाबेस में टेबल बनाते हैं। सो इट इज थ्रू एसक्यूएल क्वेरीज ओनली, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं क्रिएट का, क्रिएट टेबल। देयर इज समवन आई गेस, ओके, ओह ठीक है। नाउ इफ यू सी, ठीक है, अभी हम लोग क्या कहाँ पे थे, हाँ ठीक है, क्रिएट टेबल। सो अगर अगर हम लोग को अपने डेटाबेस में कोई भी टेबल बनाना है तो उसके लिए सिंपल कमांड्स क्या होती हैं, ठीक है। सिंपल कमांड होती है क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम, व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट, और स्टूडेंट टेबल, ओके, स्टूडेंट, ठीक है। नाउ देयर विल बी अ पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ठीक है। Now inside this bracket we will define our columns. Basically we will define our schema values, like how our table is going to look like, ठीक है। इसमें क्या हम लोग का आईडी होने वाला है, आईडी क्या होने वाला है, हम लोग इसको क्या करते हैं सीरियलाइज कर देते हैं। सीरियलाइज बेसिकली यूज होता है कि ये सीरियल में आएगा, जब भी हम लोग कोई अपना डेटा ऐड करेंगे ये ऑटोमेटिकली उसको सीरियल नंबर में, नो, सीरियल नंबर में इनपुट कर देगा, ठीक है, प्राइमरी की, ठीक है। और वी आर सेइंग कि दिस आईडी इज गोइंग टू बी आवर प्राइमरी की, ठीक है। नाउ वी आर सेइंग कि देयर इज अनदर वेरिएबल, it is going to be name and it will be of varchar. Varchar is basically what is that, anyone, any guess कि varchar क्या है? सर हाँ, हाँ प्लीज ओपन योर माइक एंड स्पीक। कोई बोल रहा था कुछ? सर एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव है या नहीं? केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज आप सारे कमांड कैसे भी लिख सकते हो, वेदर यू वांट टू राइट इट इन ऑल कैप्स और विदाउट दैट यू कैन राइट इट, राइट। यू नीड नॉट टू लाइक, ये इसमें कोई भी केस सेंसिटिव का वो नहीं आता, इशू नहीं आता कभी भी, ठीक है। बस आपका क्वेरी करेक्ट होना चाहिए इसमें, और वो सिंपली सब कुछ इनपुट ले ले। अभी आप देखो अभी ये कैसे इनपुट लेता है, ओके, 100, ठीक है। अभी varchar क्या होता है, हाँ मैं पूछ रहा था varchar क्या होता है, किसी को कोई आइडिया varchar कैसे काम करता है? एक्चुअली होता क्या है varchar, मैं ये पूछ रहा था varchar होता क्या है? सर एसक्यूएल का डाटा टाइप है जो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेता है। लाइक दोनों की आवाज लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आया, एक एक करके प्लीज आप बताओ। क्या बोल रहा था कोई, क्या बोल रहा था कोई, कुछ बोल रहा था, प्लीज एक्सप्लेन, लाइक जो भी आपको आता है बोलो प्लीज, कि varchar क्या होगा। आई थिंक कोई बोला, हाँ प्लीज। जैसे एसक्यूएल का डाटा टाइप है जो
हाँ स्ट्रिंग इनपुट लेता है, हाँ जैसे कि डेटा नेम, टाइप है, इट्स एड्रेस। काइंड ऑफ डेटा टाइप and it is similar to string data type. Yeah, correct. ठीक है. So this is why we are saying कि varchar is going to be of 100 length. ठीक है, हम लोग का जो भी नेम होगा वो उसका लेंथ 100 होगा और वो varchar टाइप का होगा, मतलब स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है. ठीक है. Now the next thing we want is age, right? और एज हम लोग को चाहिए सिंपल इंटीजर टाइप का, राइट? किसी ने बोला मेरे को केस सेंसिटिव, राइट? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक? कैपिटल है, फिर स्मॉल है, फिर कैपिटल है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, इसमें ये सबसे अच्छा है कि अच्छा ओके, नाउ वी विल ऐड कोर्सेज. ओके, varchar, ठीक है, 100. ओके, ठीक है. Let's execute this. Okay, let's execute. See, it is not giving any error because it is not case sensitive. बस आपका what it does is कि वो internally I don't know like how it will be, but मेरा assumption ऐसा है कि ये जब भी ये queries जब जाती हैं sorry guys, सो ये जब भी ये क्वेरीज लाइक जा रही होंगी, जो ये कमांड है, ये जब भी ये कोड जा रहा होगा अंदर कंपाइलर में, तो वहां पे क्या हो रहा होगा कि इट शुड बी कन्वर्टिंग द होल कोड इन अ particular version, right? Either it is converting the whole syntax in capital or small letter. ठीक है. So we need not to worry about the casing and all. Our syntax should be correct. ठीक है. यहाँ पे अगर हम लोग क्रिएट लिख रहे हैं तो क्रिएट ही लिखना चाहिए हम लोग को. ऐसे ये होना चाहिए, ये जैसे क्रिएट का स्पेलिंग वगैरह नहीं और रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, ये सब हम लोग को ध्यान रखना है, न कि हम लोग को केसिंग पे ध्यान रखना है. ठीक है, इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ओके, नाउ अभी ठीक है, अभी हम लोग ने एक टेबल बनाया एंड इट्स नेम इज स्टूडेंट. सो यू कैन सी कि यहाँ पे हम लोग का एक स्टूडेंट टेबल है. ओके, नाउ हम लोग ने सीखा कि कैसे हम लोग टेबल बनाते हैं. वी विल सिंपली राइट क्रिएट, देन टेबल, देन नेम ऑफ द टेबल, एंड देन द what we say the fields we want like id, name, age and course. We will define that, and after that we will simply run this query and it will create our table. Okay, now if we want to see anything like inside that table, what we have inside that table, so for that सबसे सिंपल क्वेरी होता है कि सेलेक्ट स्टार. स्टार मीन्स ऑल, जो कुछ भी उस टेबल में होगा वो सब कुछ लेके आएगा. स्टार का मीनिंग होता है ऑल. ठीक है, ऑल द कॉलम्स, इट इज बेसिकली इट मीन्स ऑल द कॉलम्स. सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट. ओके, नाउ इफ यू रन दिस क्वेरी, okay, we have student. Okay, let's see. Student table we have, right? Then why it is giving error? Table students already exist. Okay, so it is basically running all the queries. Let's remove this. Let's run this query. Okay, now if you see, result set is empty because we currently we don't have anything in our table. Let's insert some value in this. Okay, let's remove this query and insert into, we write insert into, किसमें इंसर्ट करना है, कौन से टेबल में, टेबल का नेम स्टूडेंट. ठीक है, उस टेबल में हम लोग को कौन कौन से फील्ड में एंट्री करनी है, नेम में करनी है, एज में करनी है और
कोर्स में करनी है या राइट और ओके कोर्स में करनी है। नाउ ये हम लोगों ने टेबल बताया कि हम लोग इस टेबल में एंट्रीज करने वाले हैं। नाउ व्हाट वैल्यूज वी आर गोइंग टू पास, ठीक है, वी विल पास एनीथिंग लाइक Rani, okay, and his age is 23, comma C। ये जो जिस सीक्वेंस में ये आपने लिखा है वेरिएबल्स की नेम, उसी सीक्वेंस में आप वैल्यू को भी लिखोगे, ओके, अदरवाइज इट विल क्रिएट सम कॉन्फ्लिक्ट। पाइथन, ठीक है, नाउ ठीक है, नाउ इफ यू रन दिस क्वेरी, it is saying कि query successfully executed, result set is empty, okay, कुछ रिटर्न नहीं आया उसमें से, that's why it is saying कि it is having empty, right? Now if you okay, let's select it, okay, okay, so we are getting Rani 23 Python. I think there is something wrong about this, I don't know, आईडी अभी वो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, ना ही इनपुट कर रहा है, don't know what is problem with this. Mhm. Serial primary key, it should be okay. So the problem here is it is not added by ORM, as we are directly like adding through the query. I think because of that it is not adding this ID and all. Otherwise it should be adding like that, but I don't know. Like I'm not so sure. But it should be adding, right? Okay, let's um, let's update it. Okay, let's update it, and let's update the values. Okay, we have seen this, we have seen this. Okay, um okay, update update. See, we have seen key how to create, how to insert. Okay, let's insert some other value. Insert into student. What we are going to, let's enter ID as well. I don't know what is wrong with this compiler, so let's enter ID as well. So name, course, and age. Okay, now what values we are going to pass is ID should be 2, name should be Vikash, and course should be Python again, and age should be 25. Let's run this. Okay, I think it is because of this only. Okay, let's see. ठीक है, अभी we know कि how to insert, right? Okay, now let's see, we have to update. Okay, we have to update. Suppose we have to update this ID only. Like, let's see how we can update this. We know how to insert. Now let's see how to update this. Update student
and set id is equals to 1. कहाँ पे where ओके चलो अब एज हम लोग का यूनिक है, लेट्स यूज दिस एज इज इक्वल्स टू 23. सो व्हाट हैपन कि हो जाएगा और वो सिंपली यहाँ पे ऐड कर देगा 1. ओके सो व्हाट हैपेंस कि जहाँ पे भी वो, अगर ऐसा नहीं है कि ये एज हम लोग का कॉमन नहीं होने वाला था, ये हम लोग का एज कॉमन भी हो सकता था, बट सिंस वी हैव ओनली वन रो विथ दिस 23 एज, दैट्स व्हाई आई हैव use that here. Okay, now let's see how we can delete this. See, these are simple queries, right? And you should be knowing these all. So delete from student where id is equals to 1. Okay, now let's see, or let's say course equals to Python. Now if you run this query, it will remove both of them because both of the students were having course as Python, right? Because of that, whatever the rows it finds कि जहाँ पे भी कोर्स हम लोग का पाइथन होने वाला है था बेसिकली, वो उस रूल्स को क्या करेगा, रिमूव कर देगा. ठीक है, कंप्लीटली उसको रिमूव कर देगा. ठीक है, इट विल नॉट सी कि हाउ मेनी रोज वी हैव डिलीटेड, जितना उसमें उसके कंडीशन में मैच होगा वो उतना डिलीट कर देगा. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल while we passing our while we running our delete query. Okay, now our last command is, okay, we have created this table and now what we want to drop this table itself. So उसके लिए क्या करना है, सिंपली हम लोग को लिखना है drop table कौन सा, students, right? अब हम लोग इसको रन करेंगे, then it will simply remove this table as well if we don't have this student table. ठीक है, सो ये छोटे छोटे कमांड्स हैं. ठीक है, आप जैसे लाइक और एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाओगे देन यू विल यू नो धीरे धीरे आपको मतलब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी. ठीक है, नाउ सिंस आई वांटेड टू नो कि लाइक कैसे क्वेरीज लिखते हैं हम लोग और सिंपल क्वेरीज लिखते हैं. ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेरीज हैं. इससे बहुत लाइक यू नो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बट फॉर नाउ फॉर यू पीपल इतना काफी है. ओके, अंडरस्टूड? एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? अदरवाइज वी विल कंटिन्यू और यस्टरडेज पार्ट जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे. लेट मी चेक we have our database running or not. So let me check db db error. Okay, so okay, so school was lost and cannot be reestablished. Do you want to, what do you want to do? Okay, now you see as our docker you know docker daemon is not running, because of that it is giving this error. Now let's first run a healthy container, then we will try to reconnect again.
Okay, so our engine is starting. So this engine basically means a daemon. Okay, so Docker daemon is starting here. I think it will hop the container itself. Let's see. Um, it will take some time. Okay, till then, till it's starting, let's open our project. So ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? ओके, सो अभी तक हम लोग ने दो मॉडल्स बनाए हैं। उसमें हम लोग ने देखा कि कल एक फॉरेन की का इश्यू आ रहा था, लाइक वंस आवर टेबल इज गेटिंग क्रिएटेड इट इज नॉट गेटिंग ऑटोमेटिकली updated, right? When we are updating it, right? I mean, when we are adding any foreign key or we are making any changes, right? It is not so engine, like basically the server is not basically deploying all the changes, okay, to directly to the database. It sees कि हाँ एक बार टेबल क्रिएट हो गया, देन इट विल नॉट चेक कि उस टेबल में हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं and क्या वट एवर वी आर डूइंग. सो उसके लिए हम लोग ने देखा कि कल हम लोग को टेबल रिमूव करना पड़ा, देन वी हैव टू like rerun the server and then it has created our table again. So to avoid such scenarios, we have something called as migration. Migration में क्या करते हैं हम लोग? इन माइग्रेशन हम लोग उसमें जैसे हम लोग ने एसक्यूएल क्वेरीज लिखा, उसमें भी काइंड ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज ही होती हैं. And whatever the changes we are doing, we will in each file, each migration file, we are writing those queries, and the server automatically what it does, it takes those migration file and update our database accordingly, okay, and update our table as well accordingly, like according to the migration files we have passed, okay. Now for that there is a tool that we need, and for that let's, I think virtual environment is not uh, activated. Let's see. Okay, I think it should be here. Okay, this is wrong command. This one is wrong. This is wrong. V E N V V E N V. Okay, so let's create a virtual environment and then activate it. Okay, our virtual environment is got created. Now let's see whether our, okay, starting only. Okay, let it be. Okay, till then let's activate our environment. Okay, our virtual environment is active now. Now we need few things to be installed, right? So अभी हम लोग को क्या इंस्टॉल करना है? समथिंग कॉल्ड अलेम्बिक, ठीक है. उसमें क्या होता है, ये हम लोग का हेल्प करता है माइग्रेशन फाइल्स क्रिएट करने में, ओके. सो लेट्स इंस्टॉल दिस. इफ इंस्टॉल lm
like, okay. Okay, let's install this. Why this is not up yet? Okay, let's rerun that again, or reopen that again. Okay, this got installed. We need to wait for our database to up. um, Containers are not running yet. Let's wait for a few minutes. Wait. Let me rejoin, guys. I think I need to restart my laptop. Okay, I'm rejoining in 2 minutes.